Good morning, everyone. Today, we want to discuss about the DC circuit analysis, in which we will discuss our today's topic, that is Maxwell loop method and the Maxwell node method. So, we will start here, in which first I want to explain you that what is the DC. The DC, direct current, is the quantity whose magnitude does not change with the time. So we can say here, for any quantity which do not change with the time is known as the DC quantity. We can show it by the graph. The graph represents here, the first line is represent, the vertical line represent here the current, and the second line represent the time. So the current I will be represented this type. Here here you can see that there is no change from starting point to the ending point. So we can say the DC does not, the quantity does not change with the time. And now we will discuss about the Maxwell mesh method. This method is also known as the Kirchhoff voltage law. So we will explain here by the circuit represent on the screen. The first, you can see here that we have the 5 resistances, that is R1, R2, R3, R4 and R5. And the 2 voltage sources are V1 and V2. So for explaining this, firstly we will have to assume the current in all the 3 loops. The first procedure to solve the Kirchhoff voltage law is that we have to assume the direction of the current in all the 3 loops. So in the first loop, you can assume from this side or from this side. This is your choice. So firstly, I am explaining, assuming the current, that is I1, and second loop will be I2, and third loop will be I3. And after this, we will have to calculate the value of these 3 unknown currents. So for we will write the equation here for the first loop. In the first loop, now apply the KVL in each loop. Then in loop 1, we can write here, we will write all the equation in V is equal to IR form. V is equal to IR means all the voltages will be come in another side, and all the resistances and the current will be come on different side. So you can see here that the voltage V1 if we take the equation for this loop, this is loop 1, then V1, firstly we will get the voltage V1. So the V1 is here because we will have to write here V is equal to IR. Then first is V1, and now if we go to the resistance R1, then the resistance value is R1 and the current goes in this resistance is I1. So we can write here R1 I1 plus this is the another branch connected to this loop, but accordingly connected to the another loop. So the current will goes in this branch will be I1 minus I2. Then I1 minus I2, because if we write the equation for first loop, then always we will minus the second loop current. Okay, so you can write here R1, यहाँ पे जो करंट हमारा जा रहा है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा R4, एंड इसमें जो करंट जा रहा है वो हमारा जाएगा I1 माइनस I2. ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो इक्वेशन लिखनी है वो हमें फर्स्ट लूप के लिए लिखना थी. तो फर्स्ट लूप के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें हमारे जो भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनको हम देखेंगे. तो यहाँ पर हमारा जो पहला लगा हुआ है वो लगा है वोल्टेज V1, एंड देन the second element is your R1 and third element is your R4. So we will write the equation according to V is equal to IR. Then V की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है हमें V1, तो हमने V1 ले लिया is equal to R1. हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो R1 है और इस R1 में जो करंट जाएगा हमारा वो जाएगा I1. सो हमने यहाँ पर लिखा R1 I1 प्लस नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारा R4. तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो जाएगा R4 I1 minus I2 because this branch is interlinked for both first and second loop. Okay, this is your equation number first. Now we will write the equation for the loop 2.
दिस इज लूप 2, हियर वी एज्यूम द करंट I2। तो लूप 2 के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें भी वही प्रोसीजर है कि आप देखेंगे कि आपको कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपके 3 एलिमेंट लगे हुए हैं, R4, R3 एंड R5। तो हमें इसके लिए इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर आप जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो V इज इक्वल टू IR, वही प्रोसीजर था। तो यहाँ पर V की वैल्यू इस लूप में यहाँ से यहाँ तक वाला जो हम लूप देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। तो V की वैल्यू जब आपकी 0 है तो आपको यहाँ पर जो आप वैल्यू लिखेंगे तो V की जगह पे हमने लिख दिया 0। ओके, एंड देन आप आगे बढ़े R1 I1 वाले फॉर्म में। देन आपको पहला जो एलिमेंट मिला वो R4 मिला, लेकिन अब हम सेकेंड वाले लूप के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I2 माइनस I1 के आप सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को आप माइनस करेंगे। एंड देन फिर आप प्लस लगाइए, प्लस लगा के आपका ये दूसरा एलिमेंट आपको कौन सा मिल रहा है, R2। तो R2 में जो करंट जाएगा वो कौन सा जाएगा हमारा, I2। तो R2 I2 ये वाला टर्म आ जाएगा आपका। प्लस आप इस एलिमेंट पे जब पहुंचेंगे तो ये आपको एलिमेंट मिला R5, लेकिन ये R5 थर्ड लूप के लिए भी कॉमन है। तो आपका जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा वो जाएगा I2 माइनस I3। तो इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी R4 I2 माइनस I1 प्लस R2 I2 plus R5 I2 minus I3. This is your equation number 2. Now we will have to write the equation for the loop third. Then the loop third will be, firstly check the elements that are connected in the loop third. So we can say there are 3 elements, R5, R3 and V2. Now we will write the equation. Then firstly you can check the direction of current and the first sign is positive. If we are writing the another side of is equal to, then the opposite sign you will have to write here. If there will be positive, then you will write here negative, and here will be negative, then you will write here positive. Okay, तो यहाँ पर हमारा जो V है, V की वैल्यू हमें मिल गई -V2। ओके, -V2 इज इक्वल टू, अब हमारा जो करंट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ था R5, और यहाँ पर क्योंकि हम थर्ड लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमारा जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I3 माइनस I2। तो यहाँ पर जो हमारी R5 की वैल्यू आएगी वो आएगी R5 I3 माइनस I2। उसके बाद जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो था हमारा R3। तो R3 में जो करंट जाएगा वो हमारा जाएगा I3। तो इस तरीके से आपकी ये यहाँ पर तीनों इक्वेशंस बन जाएंगी। जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोल दीजिए या मैश मेथड बोल दीजिए, तो आपको इसी टाइप से लिखना पड़ेगा। वहां पर आपका जो फर्स्ट एम होता है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, फर्स्ट जो है हमारा एम, वो हमें सर्किट में सबसे पहले करंट के डायरेक्शन को एज्यूम करना पड़ता है। जब हम करंट के डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं फिर हमें इक्वेशन लिखना पड़ती है, और इक्वेशन हमारी उसी फॉर्म में आएंगी कि V इज इक्वल टू IR के फॉर्म में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ and the voltage will be represented by V is equal to IR. Okay, so you will have to write the equation accordingly. And next, after these 3 equations, आपने जो 3 अननोन वेरिएबल लिए हैं, हमें इसमें इन तीनों अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना पड़ती है, I1, I2 एंड I3 की। तो ये आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आपके पास मैट्रिक्स वाला ऑप्शन आता है, वहां पर आप मैट्रिक्स वाले ऑप्शन में जाकर के इन तीनों अननोन वेरिएबल वहां पे आप लीजिएगा 3, और आपको इक्वेशन इसी फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगी कि आपका एक तरफ I1, I2, I3 आ जाए और दूसरी तरफ आपका जो भी कोफिशिएंट है वो आ जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको अरेंज करके फिर आप इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में अब आपको इसके न्यूमेरिकल के बारे में बताऊंगी, तो अपन लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।